Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your English Today I teacher. am presenting you unit number 13 and our topic is the salt range. From your book We Learn English Class 8 Published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitKan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. सॉल्ट रेंज एक पहाड़ी निज़ाम है जो पंजाब में दरियाए सिंध और झेलम के दरमियान में मौजूद है। इसका नाम यहाँ पाए जाने वाले नमक के बड़े ज़खायर से पड़ गया था, यानी कि रखा गया था, और ये दुनिया के अमीर तरीन नमक के खेतों में से एक है। कदीम ज़माने से यहाँ नमक की कान गिनी जाती है और अब भी इस इलाके में मौजूद कई कानों में खुदाई की जा रही है। ये खिता अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी आसार कदीमा की दिलचस्पी के मकामात के लिए जाना जाता है। कोलार कहार इस खिते की सबसे मशहूर पुरकशिश मकामात में से एक है और अक्सर मुकामी और गैर मुल्की सयाहों की तरफ से, ख़ास तौर पर जब से लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे ने इसे आसानी के काबिल रसाई बना दिया है, बहुत से लोग जो है यहाँ तक इससे विज़िट करने आते हैं। ये अपनी खूबसूरत झील और दीगर मकामात के लिए भी मशहूर है। मुग़ल शहनशाह ने दिल्ली की तरफ कूच करने से पहले यहाँ रुक कर आराम भी किया था और वो इस इलाके की कुदरती खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते। उसने नोट किया था कि अच्छी हवा के साथ एक दिलकश जगह है। इसने झील के करीब एक पहाड़ी पर एक बाग भी बनाया था और इसने बाग का नाम सफ़ा रखा था, जो आज तक मौजूद है। यहाँ तख्त बारी भी है जो शहनशाह के लिए एक चपटा पत्थर बना हुआ है, जहाँ से इसने मनाज़िर देखने के लिए अपने फ़ौजियों से खिताब भी किया था। जहाँ पर Why is Kalar Kahar popular with tourists? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.